second step, so first you second step your choice ki what you hairstyle like prepare. Just like a hairstyling of two types. One is European hairstyling, second is Russian hairstyling. So what the difference both hairstyling? First, European hairstyling is very basic hairstyle, like very neat and clean bun, like small curls, yeah, or big curls, then open hair, and then small braid, like very basic hairstyle. All is European hairstyling. Russian hairstyling like create the elements like rose bun, bow, spreading, pulling. This is all is Russian hairstyling. So first your choice ki what your client like choice, European and Russian, like simple language, basic and advanced. Okay, your client tell ki I want a very simple subtle look. So always doing very basic. Okay, so basic hairstyle all you doing first blow dry and second you like आपको जो यूज करना है अपने हेयर टूल्स लाइक टोंग मशीन, आयनिंग मशीन्स, एंड देन आपको कर्ल्स करके एंड देन उसी के अंदर लाइक क्रिएट कर देनी है सारी चीजें. But your client like choice, I want a like different type hairstyle, different type looks. So always create like Russian hairstyling. And Russian hairstyling, second step, always use like crimping machine. Okay, because all Russian hairstyling use crimping because बालों के अंदर एक लाइक स्टे करने के लिए आपको क्रिम्पिंग मस्ट हो जाती है. बालों के अंदर बाउंस के लिए, बालों में होल्डनेस के लिए आपको लाइक क्रिम्पिंग मशीन मस्ट हो जाती है. एंड क्रिम्पिंग इज द थ्री साइजेस लाइक first is micro crimper, second is medium, and third one is broad. Okay, and you use always micro crimper because you use like medium and broad, so no doubt like hair is very bouncy but like very frizzy and very like zigzag type. It's very visible. आप जब भी आप अपना टोंग मशीन अगर ब्रॉड वाली यूज करते हो तो बाउंस तो आता है बट जिगजैग उसके अंदर बहुत ज़्यादा लगते हैं एंड इतनी फिनिशिंग नहीं आती. बट यू डूइंग like you use micro crimper is the very nicely like crimp and not a visible but very nice bounce. Okay, so I show you. See, this crimper like you see, it's a very broad but like plate is very micro. Okay, always doing this type of crimping like micro crimper, not use broad crimper. Okay, medium crimper, broad crimper is not good. You use always this type of crimper. Okay, and then suppose you're doing like a basic hairstyle, European hairstyle, you use like tong machines and then ironing machine. Always use both. Like suppose my client telling me ki my curls always like open. Okay, so all time use ironing machine curls. But my client tell me ki yeah my hair is good and wholeness is very good for curls, so I'm used this type मतलब टोंग मशीन. मैं हमेशा पे टोंग मशीन यूज करता हूँ. बट माई क्लाइंट टेल मी कि आई वॉन्ट लाइक हॉलीवुड वेव्स एंड माई कर्ल्स इज नॉट स्टेइंग, so that I'm using more product. Like first I'm doing like a blow dryer, and blow dryer second thing this cream is fix my curls name. अगर आप इसको यूज करते हो अपने हेयर के अंदर एंड देन उसके बाद कर्ल्स करते हो तो आपके जो कर्ल्स की स्टे पावर है वो बहुत ज़्यादा रहती है. तो आई एम यूजिंग जस्ट लाइक माई क्लाइंट टेल मी कि माई कर्ल्स इज नॉट स्टेइंग, तो आई एम ऑलवेज डूइंग दिस cream. Just like I'm doing the first like blow dryer and then cream and then rinse like hair. Okay, तो हेयर में इस तरीके से आपको लगा देना है तो ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छे. एंड स्पेशली लाइक एंड कर्ल्स
जो एंड होता है हेयर का उस पे बहुत अच्छे से लगाना है. ओके, एंड देन सो टोंग मशीन. ओके, I'm always doing like standard size टोंग मशीन. अगर आप लाइक देखो टोंग मशीन में बहुत साइजेस होते हैं, लाइक 16 नंबर, 19 नंबर, 22, 25, 27, 28, 32 नंबर, like that. Okay, I'm always doing 22 number because they're very basic and standard size. You're doing like this tong machine, this number you used, and then अगर आप कभी भी इस वाली मशीन से मतलब जो 22 नंबर का होता है 22 नंबर अगर आप यूज़ करते हो तो हमेशा आपके कर्ल्स टिकते ही टिकते हैं. अगर आप 16 नंबर 19 नंबर अगर आप यूज़ करते हो तो नो डाउट कर्ल्स इज वेरी स्टेन बट इट्स वेरी artificial like curls. And then you're doing 25 number, 27 number, 28 number, 32 number. It's a very broad curls. And broad curls very बहुत जल्दी मतलब very soonly like open. So always use like 22 number. Okay. And then I have more sizes. I show you. मेरे पास है different sizes के मतलब tong machine. And first like the 22 number and 32 number. 25 number, okay, and then this is conical tong. Okay, इसका क्या यूज होता है? सपोज लाइक आपको जो यहाँ पे मेसी वाला लुक चाहिए होता है, आई एम डूइंग ऑलवेज दिस टोंग मशीन बिकॉज जब भी आप इसको यूज करोगे तो यहाँ से कर्स लाइक ब्रॉड आएगा एंड देन पीछे होता था स्मॉल. तो इससे क्या होता है ब्रॉडनेस काफ़ी अच्छी लगती है एंड पीछे आते आते काफ़ी स्मॉल एंड वेव्स काफ़ी अच्छा आता है. तो आई एम डूइंग लाइक दिस कॉनिकल टोंग मशीन एंड देन जस्ट लाइक माई क्लाइंट टेलिंग माई कर्ल्स इज नॉट स्टेइंग, तो ऑलवेज डूइंग दिस टाइप ऑफ मशीन ऑल. मतलब मैं ये मशीन भी यूज़ कर सकता हूँ अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरा जो कर्ल्स है वो नहीं टिक पाता बिकॉज एंड वाला पार्ट जितना ज़्यादा पतला होगा कर्ल्स उतने स्टे करेगा एंड एंड वाला बाल जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा वो उतनी ही जल्दी खुलेगा. तो मैं ये वाली मशीन भी यूज़ करता हूँ. कभी भी अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि मेरे कर्ल्स स्टे नहीं करते और आपके पास क्रीम वगैरह नहीं है तो हमेशा आप इस तरह की टोंग मशीन भी यूज़ कर सकते हो. इससे भी आपके कर्ल्स जल्दी नहीं खुलते हैं. देखो मुझे कभी भी जैसे कोई भी हेयर स्टाइलिंग लाइक क्रिएट करनी होती है, लाइक पुलिंग करनी होती है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो वो सारा का सारा हार्ड हो जाता है एंड पुल नहीं हो पाता. बट अगर आप सबसे पहले शाइन स्प्रे यूज़ कर रहे हो तो शाइन स्प्रे ओनली फॉर लाइक बालों को फ्रेश करने काम आता है, होल्डनेस के काम नहीं आता. तो जैसे ही इसको आप यूज़ करोगे एंड देन उसके बाद फ्रेश करोगे देन जो बाल आप उठाना चाहते हो वही बाल उठ कर आएगा. So this is hairspray, this is shine spray for freshness and this hairspray for wholeness. Suppose you doing any Russian hairstyling, any advanced hairstyling, first you doing always this spray because this spray is not like a sticky, it's very fresh. Okay, so first I'm doing any like element I'm doing, so first I'm doing this spray and then fresh, then like pull, and then for wholeness I'm using this hairspray. Okay, but both spray for use not like this type, not use like this this type. Always use because you doing like this type hairspray, so you use more spray in your hair and your hairspray in अगर बहुत ज़्यादा लाइक हेयर के अंदर आप हेयर स्प्रे डाल रहे हो तो नाउ हेयर इज़ वेरी ऑयली. ओके, एंड देन वो सारा का सारा जस्ट लाइक एलिमेंट्स लाइक बैठ जाएगा. ओके, सो ऑलवेज यूज जस्ट लाइक जितना नीड है एंड देन ऑलवेज लाइक डिस्टेंस लाइक 12 inch, not use like 6 inch because you use just like that. तो always use like जो निकलेगा always use water and water से बाल
sticky हो जाएगा and then oily हो जाएगा. Not use like that. Okay, so more rough. Always use this like 12 inch up, like this time. जितना नीड है उतना ही आएगा एंड देन गैस बाहर आएगी, लाइक इस टाइप से. इस तरीके से नहीं करना. दिस द वाटर. ओके ओके डियर. एंड देन मेरे पास कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं. लाइक सपोज अगर आपका क्लाइंट है और वो कहता है आई वॉन्ट अ वेरी क्लासी लुक. ओके, मुझे बहुत क्लासी लुक चाहिए एंड क्लासी लुक always is very neat and clean look. Okay, so I'm using two type of products. Okay, you know all. One is like IKD wax sticks. Okay, and second is dry wax. Okay, this wax stick just like बहुत छोटे छोटे हेयर जो होते हैं, okay, ये उसको काफ़ी फ्रेश एंड शाइनी कर देता है. देन अगर आपको उसी को लाइक मैट लुक चाहिए तो मैट लुक के लिए ऑलवेज यूज जस्ट लाइक बैड हैट TG. दिस इज द फॉर ऑयली बेस एंड दिस इज द फॉर मैट बेस. ओके, जस्ट लाइक योर क्लाइंट इज आई वॉन्ट अ वेरी क्लासी एंड शाइनी हेयर, सो ऑलवेज यूज दिस. ओके, then your client tell कि I want a very classy but not very shiny hair. So always yes. Okay, this is the matte. Okay dear. So then some products more. Dust powder, you know that. Okay, कि suppose your hair is very scanty and very light and very slicky hair. Okay, and you doing like back combing. Okay, so first you use this and then just like you doing like back combing. Back combing is very good. Okay, so I show you one hairstyle step by step. Okay, first just like जैसे मैं अपने क्लाइंट पे काम करता हूँ सेम मैं आपको वो चीज़ शो करूँगा कि फर्स्ट पहले मैं क्या करता हूँ, देन सेकंड क्या आता है, देन थर्ड क्या आता है, इस तरीके से. ओके, सो आई शो यू. ओके, सपोज दिस इज माई क्लाइंट. ओके, एंड देन आई एम डूइंग लाइक वन हेयर स्टाइल फॉर लाइक reception look. Okay, first I show you one like reception look. Okay, hairstyle. So first just like my client tell me ki my hair is very like sensitive. Okay, I'm doing any very any tools so my hair like damaged, so I'm always doing like first heat protectors. Okay, and then I'm doing like this. Especially for ends. Okay, especially for ends, and then like emulsify, and then I'm doing the dryer. Okay, and then सिर्फ इसको पकड़ना. Okay, and then same this side. Okay, and then
सपोज अगर मुझे जल्दी करना है, फास्ट करना है, तो आई एम ऑलवेज यूज जस्ट लाइक फ्लैट ब्रश. Okay, this type flat brush I'm using for fast. Okay dear, and second step, always use like crimping machine. Okay, you अगर suppose आपकी डमी बिल्कुल फ्रेश है तो हमेशा आपको क्रिम्पिंग मस्ट हो जाती है करना. बिकॉज क्यों? बिकॉज ऑल डमी लाइक 70% रियल एंड 30% synthetic. Okay, and this is the good because you like choose very क्या कहेंगे उसको, सिंथेटिक एंड देन रियल. अगर आप सपोज योर डमी इज वेरी रियल हेयर, इट्स नॉट गुड. बिकॉज क्यों? रियल हेयर ऑलवेज वेरी थिन हेयर एंड देन यू डूइंग लाइक हेयर स्टाइलिंग एंड ऑल टाइम लाइक डूइंग, एंड आप हमेशा फर्स्ट पहले क्रिम करोगे. क्रिम से आपके जो पार्ट्स है वो हार्ड हो जाते हैं एंड देन उसके बाद फिर आप अपना कोई भी वर्क कर सकते हो. ओके, एंड देन आई एम डूइंग द क्रिम्पिंग मशीन. एंड क्रिम्पिंग मशीन को यूज़ कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ. हाउ टू यूज़ लाइक क्रिम्प. ओके, फर्स्ट लाइक सेंटर, and then ear to ear part, section clip, same back side part, okay, and then I'm doing crimping machine. So always doing half inch part, always like is the 220 and then I'm doing 200. Okay, temperature and then like 90-degree angle, and this brand is Fox. Okay, I'm using Fox company. Always doing 90-degree angle, and hair is tight. Okay, हमेशा टाइट करके ही इसको करना है क्रिम को. इससे बालों में एक फ्रेशनेस आती है. सपोज यू डूइंग लाइक दैट,
suppose you're doing like that, so all hair is very brickish type. Okay, not doing like that. This hair and then this hair. Okay, always doing tight. Just like you're doing tight, very straight and very bouncy. See. Okay, and not like that. Some people not like. Okay, इससे बाल और डैमेज होंगे. See. Okay, always like that. सो हमेशा बालों को थोड़ा सा खींच के एंड हाफ इंच गैपिंग में. ओके तो जब तक हम क्रिम्पिंग कर रहे हैं तब तक मैं अपने बारे में बता देता हूँ. यू नो दैट ऑल कि I'm Amit, hair and makeup artist, and I'm doing both hair and makeups. Okay, and my name is hair and makeup because my starting journey is only for hairstyling, and then like my experience is 13 years for hair and makeup for 10 years. Okay, and my starting journey for like I'm doing in salon work only 3 years, and like 10 years only for like teaching. Okay, because you know that 2011-12 more people like active in Facebook. Okay, and that time I'm doing my work in salon, and I posted the posted the Facebook. So more people like me, my hairstyling, and all people like telling me ki I want learn for you. And then I decided I teach peoples. And then I skipped my job, and then I'm open my small academy, and then like teach. And my first workshop in Gujarat Anand, and second same also Gujarat. And after 6 months, one person like call me in Chennai for classes, for private classes, and this class is very superb. And this person tell more people ki one hairstylist in North India side, Amit, in Delhi, it's very good artist. So more people like telling me again you come and like teach. So my that time I'm going to Chennai like 25-30 times for classes. Then Kerala my journey I'm coming approx like 15 to 20 times that time. And more Kerala people like me, and more Kerala people in coming in my academy in Delhi also for learning purpose. Then one day, one people message me in out of India, you know, Malaysia, and she telling me कि one workshop for आपकी एक क्लास यहाँ पे करवाएंगे. Okay, I'm very shocked that time because I'm not मैंने कभी expect नहीं किया था कि I'm going to like a foreign country for like teaching. And then she like posted in Facebook, and I think 15-20 people like interested, but that time approx 120 people like interested for my class. And that time like 4 batches, and
more people like him, तो I'm going to अगेन टू अगेन, मतलब मैं कई बार वहाँ पे गया एंड देन क्लासेस वगैरह करी. देन उसी वक्त फिर मैंने मेकअप भी स्टार्ट कर दिया कि आई एम डूइंग लाइक मेकअप ऑल्सो. ओके, एंड देन मोर पीपल लाइक माई मेकअप ऑल्सो एंड देन आई एम डूइंग, माई नेम इज अमित हेयर मेकअप आर्टिस्ट. थैंक यू. सो मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज साउथ इंडिया मेरी जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट रहा है मेरे ड्रीम्स को पूरा करने में. चाहे वो केरला हो, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो लाइक हैदराबाद क्यों ना हो. बिकॉज बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो कि एक जगह पे 2 से 3 बार क्लास देने जाएं, उसके बाद फिर नहीं हो पाता. बट मैं एक एक जगह पर कम से कम 10 to 15 एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 टाइम्स गया हूँ. मतलब इवन लाइक केरला ऑल्सो आई एम कमिंग इन आई थिंक 15-16 टाइम. एंड बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे यहाँ पे. यू नो वन स्टूडेंट विजय, या विजय इज माई वेरी गुड स्टूडेंट फॉर हेयर. Just like long hair, curly hair. मेरे गुरु like that time, like 2012, Aman Yadav. Aman Yadav, yeah, he is my guru. And first time I'm coming in Kerala, one city in Thrissur, you know, yeah, first time I'm coming that time. Thrissur and Kochi also, Calicut, and one is I don't know name. I forget name. Trivandrum. Yeah. Trivandrum, and one is like a very nice beach. This city. Kovalam. हाँ. Hmm.
ओके डियर, सो मेरा जो क्रिम्प है वो हो चुका है बहुत अच्छे से, तो आप लोग देख सकते हो कि इट्स अ वेरी गुड बाउंस एंड बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है जो आपका लाइक क्रिम्प वाला पार्ट है. ओके, इसको करने से बाल बहुत ही फ्लफ़ी एंड बहुत ही सिक्योर हो जाते हैं डमी के जब भी आप अपना क्रिम्प करते हो. ओके, एंड देन I show you one hairstyle is a reception type hairstyle, open hairstyle. Okay, first I show you. Okay, so first of all, center and then ear to ear section. This part is always doing ear to ear section. This is the ear to ear section. Okay, and then you doing any hairstyle. First you doing 1.5 inch back, but point this same. जब भी आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग बनाओगे और अगर आपको फ्रंट पे क्रिएशन चाहिए तो यहाँ के बाल हमेशा ज़्यादा होने चाहिए. So that always use ear to ear 1.5 inch back section is front mix, but this point is similar. Okay, like that. Same this side. And then now curls. So first I'm doing applying my cream, fix my curls for emulsify.
especially for and. Okay, and then I show you Hollywood waves first. So, approx 1 inch area, and then always doing first back combing, then hairspray, hard spray, okay, and then always doing just like Hollywood waves curls, you doing your tongue machine this, not like that, okay, and twist, turn, twist, turn, twist, turn, twist, turn, twist, turn, all time like that, okay, and 10 to 15 second like hold, then bobby pin, then hold, okay. No use any spray, okay, no use any spray, like just hold then use, okay, no, okay, and you do just like Hollywood waves all time, your like parts, suppose this is the straight, second one like straight but two parts, third like 1 2 3, like you know like एक घर को बनाते हैं उसमें ईंट लगती है, ब्रेथ जो होती है, लाइक वन ब्रेथ्स एंड सेकेंड एंड देन मिड, देन मिड, जैसे ईंटें बनती हैं उस तरीके से, यस, ओके, एंड all curves like part is equal. First you like guideline, your guideline this is the guideline, all tongue machine you doing this here, always tongue machine this type, not like this, मतलब कभी भी ऊपर से कर्स नहीं करना, एक आपको गाइडलाइन बना लेनी है कि टोंग मशीन वहीं पे ही रखनी है आपको, ओके, एंड देन सेम अगेन, so it's the two parts, and then back combing the must, this is the guideline, twist, turn, twist, turn, twist, turn, twist, turn, twist, turn.
Then again, guideline, now this part, three sections. Back comb, guideline, then this part also.
inside back comb, not upside, okay? Because the last part. Okay, and now open, okay? So hairspray first, and like small like back comb. Hairspray. Back combing. Hairspray. Okay, always, and nicely open, then back comb. Okay, then
hairspray. You doing also this hairspray. इस पे भी स्प्रे कर सकते हो ताकि जब इसको करोगे तो ये से चिपक जाए. Hairspray. Okay, and then this is all is equal because my guideline is equal. Okay, so this course most important part is the guideline. Okay, suppose your guideline is not clear, all is uneven. इसमें कोई इंचेस का नहीं है, बस लाइक नेक की एक गाइडलाइन होनी चाहिए. दिस इज गाइडलाइन, दिस इज गाइडलाइन, दिस इज गाइडलाइन, लाइक हेयर स्प्रे. U pen. U pen. Hairspray. Okay. Hairspray. Hope so you understand, huh? Okay, like that. And now is front. So first you're doing like equal part, like dividing this part, section clip, then same this part, and now this part is for puff. So one is small C section and 45-degree, then back comb. So first you like आपको इस तरह से टाइट पकड़ना है, not like this. Always thumb use. Okay, and small hair down, then
roots touch. Small hair down, then comb ko bahar, then half part roots touch. Like, okay, and then hairspray. Then again, half C-section, 45 angle, then hairspray. Same, half C-section, 45, then back comb, then this section, half this part, and then this part, then 45, then back comb. Then always use, just like for neatness, nicely comb, very light hand. Then hairspray. Then U-pin. Like that. Okay. Then first you see like your shape is correct or not. Then hairspray. And now bobby pin. All time you're doing first just like the scalp. You're doing like touch, then move and then pin. So इससे pin काफी tight लगती है. Okay? Inside. Okay? Tong machine. Like. Okay? And then this part also curls. Like guideline, twist, turn, twist, turn, twist, turn, twist, turn.
देन बॉबी पिन। हमेशा इसको लॉक ज़रूर करना है, बिकॉज जब तक कर्ल्स हीट रहेगा तब तो मेल्ट होके खुलने लगेगा बॉब पिन एक और। जब ये ठंडा हो जाता है तो ऑटोमेटिक शेप ले लेता है। ओके, एंड नाउ द फ्रंट। Center first. Now diagonal section, always use diagonal section. Wax. So I'm using first wax for sharpness and neatness. So diagonal section, three section, and like simple braid, just like doing, and then all section like diagonal, just like you use second section. So first you pull down, okay, like I'm using third. So second is pull down. Then pull down. So your grip is back side, okay, like so इसके लुक बहुत अच्छी आएगी इस तरीके से. Then bobby pin. Bobby pin. Then hairspray. U-pin.
कम देखो, कभी भी अगर इसको आप लोग ऐसे स्ट्रेट लेके करोगे, लाइक स्ट्रेट, सो ये कभी भी बाउंस नहीं आएगा. बट यू डूइंग लाइक तिरछा sections, so always a very nice bounce. That's only diagonal. Yeah, diagonal. Okay, so 3 sections first, and this, and then mix the sections. Okay, so second section like applying, first section like pull, then third section applying, second section pull, fourth section applying, so third is Third bit pulling. yes, pull. Okay, understood. Thank you. Welcome. And always your hand is back side, okay, not front, like that. So shape is very nice. Like, okay. Then bobby pin. And then hairspray. You understand? And then this part, one rubber, okay, and then this part. Hairspray. You pin. टोंग को रखते हैं. You pin.
So we did this part. Then shine spray first. And then I'm doing twist and open. Hairspray. Open. Then again twist. Yes. Then again twist. Open. Open. You like it? Thank you. This hairstyle is very classy and very creative also. It's just like open your back combing. कभी भी अगर बैक कॉम्बिंग खोलना है हमेशा यहाँ से मत खोलना, बाल टूटेंगे. एंड धीरे धीरे. यस. टाइट पकड़ के रख जा, नीचे हाथ. फ्लैट वो दे ड्रायर. So I'm using dryer only for front because I want curls in back side and I'm doing curls already.
So first, ear to ear, 1.5 inch back section again. Section clip. Same like that. Okay. And then this section, I'm doing 2 parts. Then hairspray. Then the rubber, 2 rubbers, okay. So I want curls, but curls is already okay. I'm doing. Hairspray. Like, okay. And now I'm doing like front. So first, like C section, and then I'm using dust powder. Okay, and 0° like back comb. And this back combing is 2 inch, like 1 and 2. Then hairspray. Okay, this is the first part. Now second part, half C section, because this is small, so I'm using this section and this section, but this section is very broad, so I'm 2 parts divided, 1 part and 0° and dust powder. And then back comb 1.5 inch. First is 2 inch and second is 1.5 inch back comb. Because first section is more back combing for bounce, second for shape. One and a half.
for shape. Okay, and now third one is more broad, so 3 section back comma. Okay, first the center half, then dust powder, and there's the 1 inch back comb. Yes, for neatness. So first is bounce, second is shape, third one is neatness. So half inch back comb is skip. Hairspray. Hairspray. Okay, and last one is creation, so that I'm using back combing only half inch. Hairspray. Zero degree. Okay, and now neat. Then shine spray. Then I'm using U pin. Then one U pin this side. Then one U pin this side. Check the shape. Then shine spray again.
then you pin. You understand? Okay, and now first you pull in center this and then up. This side first, then center up. This side up, then center up. So that I'm doing the back comb is 2, 1.5, 1 and then half, because अगर आपको आगे फिनिशिंग चाहिए और बैक कॉमिंग नज़र नहीं आनी चाहिए तो हमेशा उसको 1/2 इंच तक करोगे. Okay. And now hairspray. Okay, and then knead. First hairspray very less, okay, not too much, and only knead is front. And not like some people like that. Not only back side, okay, because all his cuticles, just like you doing like, तो very smooth, but you doing like that very rough. तो आप कभी भी ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करना, okay.
आया समझ में? एंड नाउ बैक साइड. आया समझ में? इस तरीके से. एंड नाउ पेंस. बॉल पेन. Like bop it. I'm using donut, cupid, हाँ 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 मैं समझने क्या करते वीडियो लो बन जो भी बन नेक पे टच होता है द लो बन. Okay, and then this part back combing. So हमारी जो बैक कॉमिंग तो वो थ्री टाइप्स होती है. वन इज बाउंसी, वन इज लाइक medium, and one is hard. Suppose you're doing hard back comb, so always doing like that, and then this is the hard. Okay, one is medium, like doing this part, and like this is the medium for shaping. This back combing used for puff, and this back combing for elements like rose bun, cone, and then this back combing is bouncy for bounce, and like that. Okay, hard back combing always use finger, and then यहाँ से use करना है. Soft back combing always use like is this part and this part, the mid part, and then back comb, and then bouncy back combing and
end part like that. Okay, and then I'm using one is the net, the tawa net. Okay, dear. And now starting the bun. So it's two section. Spray, shine spray, shine spray, एंड बिल्कुल भी मैसी नहीं होने चाहिए, प्रॉपर नीट होने चाहिए. वैक्स से देगा. So turn, pupil, hair spray, pupil, then turn, हर एक लेयर को इस तरीके से ट्विस्ट करना है. देन यू पिन, then you pin, okay, like that. You understand? Okay, same like that, this part.
देन वैक्स. वैक्स से ज़्यादा इजी हो जाता है बिकॉज इससे बाल बिल्कुल भी नहीं उड़ते और बैठ जाते हैं बहुत अच्छे से. देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्विस्ट करके लेयर्स को बाहर निकाल लो. देन यू पिन. एंड नाउ फिनिशिंग. Okay. Extra hold spray. So extra hold spray. Then same फिर उसके बाद यहाँ से then shine spray. Sorry, wax. ये पूरा एंड अच्छे से नीट होना था तभी जाके वो खींचते हैं बहुत अच्छे से. Then you pin. And now finishing.
Then this part, पहले इसके अंदर लेयरिंग्स निकालोगे. कर्ल्स का यही फायदा होता है कि अपने आप ही ये ट्विस्ट होने लग जाता है. ओके, एंड देन यू पिन. You pin. And then wax. You pin. You pin. देन इसको इसके अंदर डालेंगे हम. You pin. सो डियर, ये जब इस तरह से हो जाए फिर एक्स्ट्रा होल्ड स्प्रे एक बार लेना है. कैसा लग रहा है? ओके, एंड कुछ कुछ पेन्स को लाइक फिक्स्ड, कुछ कुछ पेन्स को फिक्स्ड.
Okay dear, it's the done. आया पसंद? And now starting the one more hairstyle, special for जो S shape flick. So first ear to ear 1.5 inch back section, 1.5 is back section clip, and same this side also. And then now this part. So small back combing in roots, okay? It's a very important part for this hairstyle, and then more hairstyle. Okay, so now again 1.5 inch back, C section, and then 45-degree angle back comb. Dust bug. एंड एक बार मेरा साउथ साइड इतना आना जाना हो रहा था वर्कशॉप सेमिनार्स के लिए कि ऑल पीपल थिंकिंग कि आई एम ऑल्सो लाइक साउथ इंडियंस. More people like telling me, you are South Indian, but yeah, but I'm North Indian. Yeah, but I like it. You're traditional because I like it lungi and shirt. I'm very like it and suit me. Yeah, because just I posted my pictures in this type traditional. All people like it. This suit you. Yeah. Straight, not high. So 3 section like puff, not too much dust, not too much section, only 3 sections is enough. Hairspray. Okay dear, and now puff and
you doing like puff in downside, so always your hand is down, okay, not like that, all time like down, and then comb all time like finish in ends, not okay, all time. Hairspray. Okay, and then U pin. Hairspray. You see, I'm doing two hairstyle, but my dummy is not sticky because I'm using very less spray. You pin, not too much. उठा लो उसको. And now I'm using bobby pin. अगर आप स्कैल्प पे बैक कॉमिंग करते हो तो आपको पिन लगाना इजी हो जाता है, उसको ग्रिप मिल जाती है. जस्ट लाइक यू डूइंग द बैक कॉम इन योर स्कैल्प, so your grip, pin grip is very good, not like upside. One more. Hairspray. And now the crown area, eyebrows of mid of point, the crown area, same like that, this area, and you judge where is your front is good, this side and this side. Just like my bounce is this side is good, so I'm doing the flick this side. Okay, so first I'm doing this here like half inch back comb, and then nicely comb, and always doing pin just like a shape, puff shape, not like that, not like that, this type puff shape. Okay, hair ऐसे मिलाने हैं, ऐसे नहीं करना hair को, this hair like this hair makes your puff hair like. Okay, and then bob pin.
bob pin. And hairspray. And now I'm doing the flick. So this flick name is like a money technique. So first you do like this side flick. So always doing back combing this side. You doing like this side. So always doing opposite side back comb. I'm doing this side. So I'm doing back combing like this in ½ inch and hard back comb. Then hairspray. Okay, and then neat. Okay, and then this. So just like I'm doing like money like this type count, it's like that, same. Okay, like okay, and then I'm again doing shine spray. Okay, and then I'm doing like money count technique. Okay, then hairspray. So the basic hair S-shape flick, and then comb. You like it? And then this part nicely comb. Then back side shine spray. And just like shape is puff. Then U-pin. You doing like pin nicely and leave it, okay? Just like you doing the creation also. So you do okay, and then hairspray. Okay, then bobby pin. And see. Okay, and then this part also same back combing like hairspray.
then shine spray, like puff shape, okay, then you pin, then you pin, oh sorry, hairspray, then bobby pin, okay, you're doing curls also. And now, thank you. Thank you so much, dear. Then I'm doing donut and this area, all puff areas. Okay, this part. Then U pin. Net. U pin. Okay, so there you divide the two section equal. First section ½ inch area, then this section is ½ inch area, and then nicely comb and then hairspray. Like then U pin. This section, two section divided, then shine spray, then hairspray, then U pin, same like this side area, then shine,
then hairspray, then U-pin, okay, and then same this part, U-pin, hairspray, then shine spray, then U-pin, U-pin, you like it? Thank you. मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हेयर स्टाइल जितना इजी वे में बता सकूं उतना ज़्यादा बेटर है, ना कि घुमा फिरा कर। शाइन, U-pin, hairspray, U-pin, okay. Thank you so much. Hope so you enjoy this class. हाँ जी,
ये लिया, रख लिया चाय. Okay, and then I'm using wax. Yeah, front messy. So To see the extension also, hair extension. hair extension also. Yeah. Okay. I think tomorrow butching hair, that's very good for. Hmm. We want to see that one. Originally, Yes, yes, yes. actually hair ആണെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് finishing അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, let's see. Yes. And then, so one section is thumb, Yes. Very tight. okay, and this part. Okay, like pony. And now front, then front area is 1 inch, remove it, section clip. And now this area puff. Zero. 45. Zero. Proper zero. Then this area also mix. Then hairspray. Same this area. Also mix. Okay, and then bobby pin. टॉप मशीन लगा दो, टॉप मशीन. टॉप. ओके, इस तरीके से.
So crown area, and then 0 degree back comb चाहिए भाई, तेरा भी अजीब है. अब ये लिया हल्का सा बैक कॉम हेयर स्प्रे, एंड इसको लेना है. दिस मशीन इज वेरी गुड, दिस एंड देन हेक्टर वन, बिकॉज दिस द रोटेटेड this part, बॉबी पिन लेना है, then this part, देना. Okay, and now this part, two rubbers again, two rubbers, okay, and then small section, hard back comb,
Okay, and then hairspray. Then now rub comb. Then one rubber more. Okay, and then this rubber for gap. For gapping, okay, just like straight pony like. Okay, understand? And now that tightening छोड़ दे section clip. Twist, turn, twist, turn, twist, turn, twist, turn. Then bobby pin. Then again twist, turn, twist, turn, twist, turn, twist, turn, twist, turn. U pin, U pin. ट्विस्ट टर्न सारे मतलब इसी तरीके से ही आएंगे.
You open. You open. Okay, dear. And then now open. Hairspray. Hairspray.
फ्लैट ब्रश से नहीं एक बार से फ्लैट ब्रश करके अच्छे से पकड़ के रखना. हेयर स्प्रे. This hairstyle suit for like gown, Christian hairstyle like okay. And now this part. This pin is remove it, okay, because this already pinned. And now first this part, पकड़ इसको. Then wax. Very small section. Okay, then hairspray, like texturize. And then this part also wax. Then U-pin. Then hairspray. Bob pin. Proper tight, okay, यहाँ से. This side properly tight. Then U-pin. Then bobby pin.
Okay, and see. This look like texturized. Okay. Then bobby pin. And now this part, rubber, okay. And now this part, first you remove the pin. These all section then wax, hairspray. Okay. And now one like section is downside, half area, then wax, now you know wax is very important, very small hair, all things is very clear. Bob pin. Hairspray.
One bobby pin देना. Okay, days are done. Okay, you click the picture. Huh? Thank you. So the proper look you see, the like ponytail, like stand proper, and then this are texturized, like waves. Okay, click.